do you mean by a database? Anyone? It can be a book chapter, it can be a conference proceeding, anything. So you need to have a space wherein you store all the information, the data in the form of your research output, right? So that is a database. And second is the research matrix. What is a matrix? Research matrix? Anyone? How can you define a matrix? Combination of rows and column. And A table or spreadsheet. table or spreadsheet, okay. See, if I talk of research matrices means that I am trying to assess my research output, right? So, what are the different parameters on which I can research my research output is what you call as a research matrices, right? It is not matrix, matrix, nahi hai, it is metrics, right? So there are certain parameters with the help of which I can assess the research output. That is what you call as a research matrix, right? And database, I told you, it is a repository wherein you just submit your data or the research outcome in the form of a research paper, a review paper, a conference proceeding, a book chapter, anything, a patent maybe, right? So while you are doing any research, the first database that comes into picture is Scopus. Have you people heard of this Scopus? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So Scopus is one of the largest subscription-based subscription. You understand what is subscription? While we were talking of open access, I guess Dr. Rishabh might have told you the difference between open access and subscription-based publication. What is subscription-based? मैम जहाँ पर आपको आर्टिकल रीड करने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ती है Payment करनी पड़ती है. It is not free of cost, right? So Scopus is one of the largest subscription-based abstract and citation database of scientific literature and high-quality web resources. People are coming. Chalo. The Scopus database, it has been created by one of the publisher Elsewhere. Elsewhere सुना है आप लोग ने? यस Yes, मैम ma'am. Right? So Elsewhere is the publisher, the name of the publisher who has created this database that is called as Scopus, right? And it is a primary resource. It was developed in the year 2004, and it is one of the primary resource for every researcher, for any of the academic institution and the funding bodies, if they want to track, if they want to analyze, and if they want to visualize the research output for any scholar, any researcher, any author, right? So this is what this Scopus database is. Now coming to the key features. I told you it is a comprehensive database, subscription based comprehensive database. Comprehensive, by comprehensive, I mean people are coming. Just wait for a minute. Ma'am, please share your screen. I'll be sharing these notes after this lecture because I'm using two things, the laptop as well as the phone. Right? So I'll be sharing all the notes, all the lecture once I complete this, right? After this class. So if you have any doubts after the class, we can take all the doubts in the next class, right? Okay, the key features it includes, it is a comprehensive database. By comprehensive, I mean that Scopus indexes millions of documents, right? If you have to access certain research articles, if you need to access conference papers, the book chapters, the patents,
all are indexed in Scopus, right? You have millions and millions, but a huge amount of data is indexed in Scopus. Majorly, there are 4 fields जिसका data आपको Scopus में मिलता है. First is science, second technology, then you have the data related to medicine and the data related to social sciences. Data in the form of, again, I'm telling you, the research articles, the conference papers, maybe the book chapters, maybe the patents, right? Now, second is it is a powerful search tool. What does that mean? That users, who are the users? We are the users. They can search for documents. They can search for different authors. They can search for different institutional affiliations using a variety of parameters, right? You can search the Scopus database using different Boolean operators and or not, right? Everything that can be done in a single database, right? Next is you can have access to different author profiles. Say if you want to search my profile in Scopus only, what you need to do? You just have to enter the name. So every scientist or every researcher with the name of Shagun, right? That will be reflected on the Scopus web page, right? Now, if you want to be specific, key, I want to search for Dr. Shagun Gupta from Maharishi Markandeshwar. So what you can do is you can just click on the affiliation section, right? So wherever you find Dr. Shagun Gupta from Maharishi Markandeshwar, you can just click on that and all my profile would be shown directly to you, right? So in my profile, you can have the access to all the publications, to different indices जो अभी आप हम बात कर रहे हैं research indices. What is my H index? What is my I10 index, right? How who all are my collaborators? You can have access to all the information from Scopus itself, right? Also, you can uh, just you can see that maybe my profile, or if you have your Scopus profiles ready, you can also link your Scopus profiles to a ORC ID. Anyone who knows what is ORC ID? No? नो Okay. मैम पता Okay, नहीं। चलो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि see if you want to search for my profile in Scopus, what will you do? You will just write my name, right? And maybe my affiliation, right? And my profile would be shown on the screen on the database, right? Now, जरूरी नहीं है कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में आई एम द ओनली वन जिसका नाम शगुन है, right? And or I am the only one who is Shagun Gupta, right? There can be multiple entries, right? So there can be a chance of redundancy कि आपने मेरा प्रोफाइल खोलना था, लेकिन just because there were multiple names, instead of my profile आप किसी और की प्रोफाइल पे एक्सेस कर रहे हो, right? So how can you मतलब उस चीज को आप कैसे काउंटर कर सकते हो? If you have my ORC ID. ORC ID क्या चीज है? It is actually a unique ID. ORC stands for Open Researcher and Contributor ID. Right? It is free. It is actually a digital identifier, a 16-letter code that will distinguish me from all the other researchers who have the same name, with whom I share the same name, right? मेरा एक 16-digit code होगा, alphanumeric character होगा, that will be unique to me only, right? That cannot be shared by any other researcher, चाहे हमारे names same भी हैं, चाहे हमारी affiliation same भी है, right? So if you have that ID, that is something unique to you only, right? So in the Scopus profile, this ORC ID is also linked, right? Now, again, you can have access to different matrices, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि if you want to look for the author's research output, that can be done with the help of different parameters. The first parameter is the H index. You have the citation counts. You have access to the I10 index. What is the site score?
all the information you can get it from the Scopus webpage, right? Now, what is the meaning of each term? I'm going to tell you in this class only, right? Is it fine? Scopus, it is a subscription based database that has access to millions of documents. By document, I mean research articles, review articles, conference papers, book chapters, patents, right? That has access to multiple documents, right? Second, I told you that it is created by a publisher called Elsewhere in 2004, and it is a powerful search tool wherein you can have the author profile. You can link the author profile with their ORC ID. ORC ID, I told you it is Open Researcher and Contributor ID. It is free. It is a 16-digit code that is unique to every researcher, every author, every scholar who is doing research of any sort, right? And you can have access to different research matrices in the form of H-index, in the form of the number of citations, in the form of item index, in the form of H-index, right? So this is all comprised within this particular database, Scopus. The next database is your Web of Science. Web of Science, again, it is a subscription-based online platform, right? Just like your Scopus, Web of Science is another subscription-based online platform. More or less, the information would be similar. The difference is that it is owned by Clarivate. Since आपको अभी मैंने बताया, your Scopus is owned by Elsewhere, it is owned by Clarivate, right? So if you want to have this academic research and citation analysis for any author or any institution, you can go directly to this database, that is Web of Science, right? Again, it has access to multiple journals, books, conference papers, right? Now you can track the citations. I told you for any academic research या citation analysis के लिए you can directly go to Web of Science, right? So this Web of Science, it tracks the citation. By citation I mean कि कितने बार एक particular paper दूसरे papers में cite हुआ है या फिर किसी एक पेपर ने डिफरेंट पेपर्स को कितनी बार साइट किया है. दैट मीन्स आई विल बी वर्किंग ऑन टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट द रेफरेंसेस एंड सेकंड दैट व्हाट पेपर्स हैव cited a particular work. I am working on two things now. One is the work and second is the citation, right? Ma'am, how these are different from PubMed and ResearchGate? I'll tell you. I'm just coming to that only. Okay. Right? Now, next is your PubMed. Right? Now, PubMed is actually a free search engine. It is not subscription based. Just like I told you कि आपका जो Scopus या Web of Science है, it is subscription based, right? PubMed, it is not subscription based. It is free search engine, and it is developed by National Center for Biotechnology Information at National Library of Medicine, that is NLM, right? Within this PubMed, आप directly access कर सकते हो Medline database पे. But the only कह लो limitation of PubMed is कि इसमें जो abstracts हैं या citations हैं या research है, it is more focused on biomedical and life science literature, right? So if somebody is working on biomedical sciences या life sciences या there are certain healthcare professionals, so जो भी लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं, for them PubMed is a valuable tool. Is it fine? So this is the difference. It is first of all free of cost. Second, the access, if I talk in terms of the domain, कौन सा domain इसके अंदर included है. Majorly आपके पास abstracts या citations या books या research papers, review articles आपको मिलेंगे that are more confined to your biomedical and life sciences literature. Right? Okay. Okay. Now, these were the different databases.
राइट? डेटाबेसेस जहां पे आपने अपना डेटा स्टोर किया. डेटा, कौन सा डेटा? In the form of research output, research article, review article, patent, book, chapter, conference papers, कि you need certain space जहां पे आप अपना research output को deposit कर सकते हो. These were certain databases. Now coming to that, what are the different research matrices, right? आपने अपना पेपर सबमिट कर रहे हो, द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू चेक कौन सा डेटाबेस. हाईली रिप्यूटेड, इफ आई से इट इज स्कोपस एंड एल्सवेयर ओनली, राइट? फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन से पब्लिशर पे जाना है, एल्सवेयर पे जाना है, स्कोपस पे जाना है, कहाँ पे जाना है, राइट? सेकेंड इज, नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई इज द जर्नल, कि आपने कौन से जर्नल को टारगेट करना है अपना पेपर सबमिट करने के लिए, राइट? तो आप जर्नल को जब आप टारगेट करते हो, देयर आर सर्टेन मैट्रिसेस दैट कम्स इनटू पिक्चर. क्या क्या चीजें आपको जर्नल के अंदर देखनी है व्हाइल यू आर सबमिटिंग योर पेपर? द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज you look for the impact factor of the journal, right? पता है किसी को what is the impact factor? Anyone? Yes, ma'am. हाँ जी. Ma'am, it is the ratio of average number in a particular year to the papers published in last 2 years. Okay. ओके, इम्पैक्ट फैक्टर को पढ़ना या किसी भी जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर को जानना जरूरी क्यों है? Why is it important? See, if you want to check that how prestigious is the journal, what is the influence of this particular journal, the first and foremost thing is that you need to know that what is the impact factor of the journal. जितना ज्यादा किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होगा, इट विल इंडिकेट दैट इट इज ऑफ ग्रेटर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस. इज इट फाइन? नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट? अभी प्रतिभा ने हमें बताया कि व्हाट इज अ इम्पैक्ट फैक्टर. इम्पैक्ट फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी विद विच द एवरेज आर्टिकल इन अ जर्नल हैज बीन साइटेड इन अ पर्टिकुलर ईयर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2025 में एक पर्टिकुलर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है. हाउ विल आई डू दैट? ओके, आप एनी वॉलंटियर, आप मुझे किसी भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जर्नल का नाम बताएंगे. Indian Journal of Ophthalmology. हाँ जी, इंडियन जर्नल ऑफ Ophthalmology, IJO. IJO. एक IJO, इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है? दैट इज 1.9, राइट? Okay. हाँ, 1.9 इम्पैक्ट फैक्टर. ये कैसे कैलकुलेट हुआ? सो व्हाट विल आई डू इज, अगर मुझे जानना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, से आई एम वर्किंग ऑन 2025. So what will I look at while I am computing the impact factor? There are two things. First is the total number of citations in 2025 to the items that were published in 24 and 23. आज से 2 साल पहले जितने भी पेपर्स इस जर्नल में सबमिट हुए हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी है इन द ईयर 2025. Is it fine? This is the first thing that I am going to look into. Second is, what are the total number of citations in the year 2024 and 2023, right? For example, अभी हमने बोला ये जो आपने जर्नल है इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.9, Nice. राइट? सो 1.9 का क्या मतलब है कि अगर 2025 में 1.9 इम्पैक्ट है इसका, फॉर एग्जांपल इस जर्नल के अंदर 2025 में से 1000 आर्टिकल्स हमारे आए, राइट? आउट ऑफ दो 1000 आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल, हम चेक करेंगे 2024 और 2023 में कितने आर्टिकल्स थे.
टोटल अगर 1000 आर्टिकल्स पब्लिश हुए इस जर्नल में, आई लुक इनटू कि 23 और 24 में द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए, से इट वाज 500. फाइन. नाउ नेक्स्ट Okay. थिंग इज, मैं क्या चेक करूंगी कि ये जो 23 और 24 में जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए, इनमें टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी आई. इन द ईयर 2025, total number of citations of the papers that were submitted in the year 2023 and 2024 वो कितनी है. Is it fine? Yes, ma'am. Right. So what will I do? I'll just divide just 500 की total number of say मेरे पास 2025 में number of citations आई maybe 122, right? And total number of articles जो submit हुए थे वो कितने थे, 500 I told you, right? So it would be 122 divided by 500. That would be the impact factor of a journal for that particular year, right? Okay, ma'am. Is it fine? Yes, जैसे ma'am. एक पर्टिकुलर जर्नल का सही इम्पैक्ट फैक्टर 3.5 है, राइट? सो व्हाट विल आई डू? मुझे 2025 में मैंने कैलकुलेट किया कि इस पर्टिकुलर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 3.5 है, तो मैं क्या करूंगी, 24 में कितने आर्टिकल्स हैं, 23 में कितने आर्टिकल्स साइट हुए, आई काउंट दोस, राइट? से नंबर ऑफ आर्टिकल्स साइटेबल इन 2025, those were published in 24 and 23, it is 122. And total number of items that came in 23 and 24, say it was 34, right? So the total would be 122 divided by 34, it is 3.5. Is it fine? So I'm looking into two aspects here. One is the citations in a particular year to the items, those were published in preceding 2 years. And second is the number of citable items in the preceding 2 years. These are the two things that I am looking into while I am calculating the impact factor for a particular journal, right? So while you have identified the database या publisher जिसमें आपको अपना पेपर सबमिट करना है, the next thing is that you will have to look into the journal कि कौन से journal में आपको पेपर सबमिट करना है. And for the journal, the first thing is, the first matrix is that you need to check that what is the impact factor of the journal, right? And impact factor, I told you, it generally indicates that how prestigious the journal is, or what is the influence of this particular journal to the scientific community, right? Or in simple words, you can say impact factor, it reflects that how often the articles that are published in a journal are cited by other researchers. Is it fine? Yes, no? Once Yes. I Yes, share ma'am. the slides, it will be easy for you to understand, right? Second is the site score. अभी impact factor में अभी हम बात कर रहे थे the preceding 2 years, right? While you are calculating the site score for a particular journal, what you look at the preceding 3 years. This is the only difference, right? For example, मुझे 2025 का site score निकालना है for a particular journal. So what will I look at? I'll look at the citations that were received in 2025 for documents that were published in preceding 3 years. That means 21, 22, and 23. Is it fine? The total number of citations received in 2025 for the documents that were published between 21 to 24 divided by the total number of documents that were published in those preceding 3 years, right? This is the only difference here if I talk of site score and impact factor. ठीक है? नेक्स्ट इज, ये था जर्नल का रिसर्च मैट्रिक्स कि अगर आपको किसी भी जर्नल का प्रेस्टीज जानना है तो दीज आर द टू थिंग्स दैट मेजरली द टू थिंग्स दैट कम्स इनटू पिक्चर. फर्स्ट इज इम्पैक्ट फैक्टर एंड सेकंड इज द साइट स्कोर, राइट? लेकिन अगर आपको किसी ऑथर का रिसर्च मैट्रिक्स जानना है
या किसी रिसर्चर का रिसर्च मैट्रिक्स जानना है, then there are certain other parameters that comes into picture. The first parameter is your H index. Right? So किसी अगर इंडिविजुअल के बारे में उसका रिसर्च आउटपुट जानना है, you look for H index, you look for item index, you look for the G index, right? लेकिन अगर आपको एक किसी जर्नल का रिसर्च आउटपुट जानना है, then you go for matrices like your impact factor, your site score. Is it fine? Now, what is this H index? Now, H means it is the letter for the scientist who discovered this H index, this index, the research index, right? Now, the name of the scientist who introduced this H index is, who is this? Please mute. H stands for Hirsch, Hirsch, right? He is the scientist who developed an index to quantify an individual's scientific research output. Now, H index का मतलब क्या है? For example, मेरा H index say 17 है, right? So anyone who has this index of 17, that is H here. That means कि this person has published 17 papers, each of which has been cited in other papers at least 17 times. Right? So अगर मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूं, से आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ ओनली, सो अगर मेरा H इंडेक्स 17 है, उसका क्या मतलब है कि आई हैव 17 papers published in different journals, and every 17 papers, every paper out of those 17 has been cited at least 17 times. That is the H index, right? So this actually gives me the indication कि जो जिस भी रिसर्चर या ऑथर की मैं बात कर रही हूँ, उसका रिसर्च मैट्रिक्स क्या है, right? This is your मैम हाउ कैन वी सी दैट? जैसे मेरे रिसर्च पेपर है तो मैं उसकी साइटेशंस कैसे चेक कर सकता हूँ, कितनी साइटेशंस हैं? सॉरी, एक मिनट. क्या क्वेश्चन है आपका? आपका कोई रिसर्च पेपर है, आपको नंबर ऑफ साइटेशंस चेक करनी है कितनी है. हाँ जी. तो Yes. फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज, आपका कोई गूगल स्कॉलर आईडी बना है? नो मैम. First thing is you just create a Google Scholar ID, right? या Scopus ID आप generate करें. ओके मैम. ठीक है, तो आप जब अपना Scopus ID या Google Scholar ID या ResearchGate ID सॉरी जब भी आप ये ID क्रिएट करते हैं, so what happens, they'll ask you certain information, right? Your affiliation, किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, कितने रिसर्च पब्लिकेशंस आपके हैं, या अगर आपका ORC ID है, that would be the best. जैसे अभी मैंने बताया, इट इज यूनिक, राइट? तो आप क्या करेंगे, या ORC ID जनरेट करो, या अपना गूगल स्कॉलर आईडी जनरेट करें, या स्कोपस आईडी जनरेट करें. एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. तो अगर एक इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट की एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे, दैट विल बी अल्टीमेटली पिक्ड बाय द अदर डेटाबेसेस आल्सो, राइट? सो आपको हर जगह इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस में अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है. तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना गूगल स्कॉलर प्रोफाइल खोला है, मेरे पास मल्टीपल रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स हैं यहाँ पे. सो व्हाट विल आई डू, विद इन दिस डोमेन ओनली गूगल स्कॉलर, you have access to two things. First is the number of citations, second is the H index, and third is the I10 index. तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि since from the time आपने ये साइंटिफिक कम्युनिटी या साइंटिफिक डेटाबेस चूज किया है या अपना आईडी इस पे बनाया है, तब से अब तक आपके पेपर्स में कितनी साइटेशंस आ चुकी हैं ईयर वाइज. Is it fine? From there you can have the count. राइट? आपको खुद काउंट करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस आपको सब कुछ काउंट करके खुद देगा, राइट? द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू हैव द
maybe the Google Scholar ID, maybe the Scopus ID, maybe the Web of Science ID, or maybe I told you कि ORC ID. Is it fine? तो आप किसी कहीं पे भी जाएं, पहले अपना ये ID बनाएं. It applies to everyone, right? सबसे पहले it is mandatory for any researcher कि आप एक ID आपके पास होना ही होना चाहिए. Is it fine? So वहां पे डायरेक्टली आपको डेटाबेस कैलकुलेट करके देगा, आपको खुद से कैलकुलेट कुछ नहीं करना है. कितनी नंबर ऑफ साइटेशंस आपके पेपर में पर ईयर आ रही हैं, यू कैन हैव द एक्सेस टू दैट. आपका एच इंडेक्स किस पेस से बढ़ रहा है, यू कैन हैव एक्सेस टू दैट. आपका I10 इंडेक्स किस पेस से बढ़ रहा है, यू कैन हैव एक्सेस टू दैट, राइट. अगर आपके 20 डॉक्यूमेंट्स है, 20 के 20 डॉक्यूमेंट्स पे टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस कितनी आ रही हैं पर ईयर, यू कैन हैव एक्सेस टू दैट ऑल्सो. इज इट फाइन? So we were talking of H index. H index, I told you that it gives you the indication कि कितने number of papers हैं मेरे और कितनी बार वो cite हुए हैं. H stands for the number of articles and the number of citations. Let us take another example. Suppose एक ऑथर है, उसके 5 पब्लिकेशंस है फॉर एग्जांपल, राइट. और हर पब्लिकेशन पे से फॉर द फर्स्ट पब्लिकेशन द नंबर ऑफ साइटेशन इज 9, फॉर द सेकंड इट इज 7, फॉर थर्ड मे बी इट इज 6, फॉर फोर्थ इट इज 2, एंड फॉर फिफ्थ से इट इज 1 citation only. So in this very case मैं कहती हूँ जो ऑथर है उसका H index कितना है, it is 3. Why? Because in this case the author has 3 publications with 3 or more citations. Is it fine? Right? H का मतलब ही क्या है? It is the count कि कितनी number of publications है, उस पे at least कितनी citations हैं. That is the indication of, that is H index. Next is your I10 index. I10 index, again, it is developed by Google Scholar. राइट. स्कोपस पे जाएंगे, वेब ऑफ साइंस में जाएंगे, आपको एच इंडेक्स भी मिलेगा. बट इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ गूगल स्कॉलर में एच इंडेक्स के साथ साथ आपको एक और मैट्रिक्स मिलेगा जिसको कहते हैं I10 इंडेक्स, राइट. I10 इंडेक्स का क्या मतलब है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बाय एन ऑथर दैट हैव रिसीव्ड at least 10 citations. कितनी ऐसी publications है from an author जिसपे कम से कम 10 citations हैं. This is your I10 index. And last is your G index. G index का क्या मतलब है? G index means it is similar to H index only, but यहाँ पे जो emphasis है, it is on highly cited publication. Now what does that mean? कि अगर किसी ऑथर का G index 20 है, उसका क्या मतलब है कि उसके जो top 20 papers है, top 20 papers in terms of citation count, those have received 20 square citations in total. For example, G index मैंने कहा किसी का 20 है, that means अगर उनके 100 पेपर्स भी हैं फॉर एग्जांपल टोटल, तो उनमें से 100 में से जो टॉप 20 पेपर्स हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ साइटेशंस दैट हैव रिसीव्ड एट लीस्ट 20 स्क्वायर citation. 20 square is 400 citations in total. This is your G index, right? So these are certain indices that helps you to check the author's research outputs. One is your H index, then it's your I10 index, then is your G index, and last is your alt matrices. अब देखो, your research is not limited to Scopus, Web of Science. आजकल इतने सारे online platforms है. You have Twitter, you have different videos, you have Wikipedia pages, you have Facebook pages, you have Twitters, you have different blogs, right? So यहाँ पे जितने likes, जितने comments या जितने लोग इन चीजों को भी access कर रहे हैं, again you have certain matrices जिसको आप बोलते हो alt matrices या फिर alternate matrices, right? जितने भी ट्रेडिशनल साइटेशन काउंट्स हैं, इसके अलावा कितने लोग आपकी रिसर्च को
एक्सेस कर पा रहे हैं, मे बी फ्रॉम मे बी ब्लॉग्स के फॉर्म में, ट्विटर के फॉर्म में, फेसबुक लाइक्स के फॉर्म में, विकिपीडिया के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, इट ऑल comprises under alt matrices. Is it fine? Yes, no. So I'm Yes, sharing this slide ma'am. with you right now. Yes, So you ma'am. can go through these slides, and if you see any problem, right, we can have the discussion on the same topic maybe next Saturday also. Is it fine? Excuse Okay, me, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Hanji, Good evening, ma'am. good evening. Ma'am, I was having a doubt about the quotiles. Like we go for quotile ranges of the journals. What are they basically? Again, it is how prestigious your journal is, right? जिसका हम कहते हैं impact factor ज़्यादा होगा, तो we say it belongs to Q1, Q2. आप quartiles Q1, Q2, Q3, Q4 होती है journal की. Q1 are the one, those are the most, मतलब जितने journals Q1 में है, that means उनका impact factor बहुत अच्छा है. These are the most reputed journals in a community, in the scientific community, right? Q2 थोड़ा सा कम ranks, Q3 उससे नीचे, right? So quartiles में हम एक अलग lecture ले लेंगे, right? It's a good question कि impact factor और quartiles में differentiate कैसे कर सकते हैं. Is it fine? So next lecture Yes, I'll be ma'am. briefing on it also, right? Do remind me this thing. It's a very good question. Excuse me, ma'am. Hanji, Thank you, ma'am. okay. मैम बाय मिस्टेकनली मुझसे क्लास कट हो गई थी तो आई हैव जॉइंड इट अगेन सो माय अटेंडेंस विल बी काउंटेड. How can I answer that? Come on. मतलब बाय But we मिस्टेकनली see मुझसे to it. कट हो We गई see थी. to it. I cannot say anything right now. I'll see to it. ओके Okay. मैम. Ma'am, hello. Hanji, Hanji, good evening, ma'am. good Ma'am, evening. in unit they have given SNIP, SJR, and IPP site scores, Hanji. impact factors, topics. Hanji. तो ये भी ये भी मैम कवर होंगे बच्चे, ये भी cover. सब कवर होगा. ये तो जस्ट Okay. जिस्ट, राइट? Just ऐसा नहीं है, वर्ड टू वर्ड सब कवर होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. okay. Thank you ठीक है. so much, ma'am, for a beautiful ओके. lecture. Thank you, ma'am. Okay, thank you. I'm just sharing it with you. I'll share with this MP06 वाला जो ग्रुप है, मैं Okay, उसमें ma'am. शेयर कर रही हूँ. Databases and research matrices. I've shared this PDF of databases and research matrices in MP06 group, so you can have a look from there. ठीक है ना? I would expect everybody कि एटलीस्ट स्कोपस का पेज खोल के देखें, वेब ऑफ साइंस का पेज खोल के देखें, पबमेड का पेज खोल के देखें, एंड आपका जो रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके उन जर्नल्स का एक बार चेक करें कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. वहां पे सब लिखा होता है इम्पैक्ट फैक्टर के कि उसका साइट स्कोर कितना है, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. किसी भी ऑथर की, मतलब द साइंटिस्ट दैट यू आर फॉलोइंग फॉर योर रिसर्च, यू कैन गो टू द प्रोफाइल्स ऑफ दोज साइंटिस्ट, यू कैन हैव द लुक ऑफ at different research matrices. What is the H index? What is their I10 index? What is the G index? Everything you can have a look at, right? Ma'am, H index for a paper, suppose in a paper they are a primary author and then they are a corresponding author. Hmm. तो जो H index for the same paper authors का अलग अलग होगा या फिर सेम होगा? देखो, H index डिपेंड करता है कि उस ऑथर के और कितने पेपर्स हैं, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आप और मैं एक पर्टिकुलर पेपर में को ऑथर्स हैं, राइट? जरूरी नहीं है मेरा जो पब्लिकेशन काउंट है और आपका पब्लिकेशन काउंट मैच करेगा, राइट? हो सकता है मेरे 10 पेपर्स हैं, आपके 20 हो, राइट? तो बेस्ड ऑन दैट मेरा H इंडेक्स वेरी करेगा. आई कैन नॉट से कि आपका और मेरा H इंडेक्स बिल्कुल सेम रहेगा, राइट? दैट डिपेंड्स दैट हाउ मेनी. Particularly about that paper, suppose आपके भी एक है, मेरे भी एक है. एक We है, are on. हाँ. हाँ, तो वो Then भी at देखना है ना कि हाउ मेनी टाइम्स योर पेपर हैव बीन साइटेड, हाउ मेनी टाइम्स माय पेपर हैव बीन साइटेड, राइट? तो हर पेपर को हमें साइटेशन देखनी पड़ेगी. दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट H इंडेक्स फॉर यू एज वेल एज फॉर मी. फॉर एग्जांपल मेरा H इंडेक्स है 4,
एच इंडेक्स 4 होने का मतलब कि मेरे पास एटलीस्ट ऐसे 4 पेपर्स हैं जिन पे कम से कम 4 साइटेशंस तो हुई हैं। बेशक टोटल नंबर ऑफ पेपर्स मेरे पास 10 है, लेकिन मेरे पास 10 में से ऐसे 4 पेपर्स हैं जिसमें कम से कम 4 साइटेशंस हुई हैं। माय वर्क हैज बीन cited at least 4 times in different journals. आपका हो सकता है 5 हो। व्हाट डज दैट मीन कि आउट ऑफ 10 यू हैव एटलीस्ट 5 पेपर जो कि कम से कम 5 बार दूसरे लोगों ने साइट किए हुए हैं, राइट? इट कैन बी सेम ऑल्सो, हो सकता है आपका भी 4 हो, मेरा भी 4 हो, बट दैट डिपेंड्स कि कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें जिनकी साइटेशन इतनी है। इज इट फाइन? Got yes, yes. Thanks. Okay. चलो, that's all for today. See you on Saturday, next Saturday. And October And मैम में एक अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर किसको हम बोलेंगे? लाइक कई जर्नल्स का मैम 0.59 या ऐसे रहता है, हाँ, तो व्हाट विल बी देखो, कॉल्ड ए गुड इम्पैक्ट हमेशा फैक्टर? इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है, देयर आर सर्टन आई मीन मेट्रिसेस आल्सो कि अब डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हो, राइट? कई लोग इम्पैक्ट फैक्टर को काउंट ही नहीं करते, राइट? दे जस्ट गो फॉर द साइट स्कोर, दे लुक फॉर द SNIP इंडेक्स, राइट? तो डिपेंड करता है आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हो और आपकी डोमेन में इंपॉर्टेंस किस चीज की है। Is it fine? Say I am into biomedical research, so I have to look for the impact factor of the journal. मुझे देखना है कि सबसे अच्छे papers कौन से journals में मेरी field से related जा रहे हैं. So this is one criteria that I have to look into. Maybe if I talk in terms of maybe management people, the criteria would be different. But ये जो criteria हैं, impact factor of the journal या H index, ये सब basic हैं जो हर फील्ड में पता होना बहुत जरूरी है, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते इम्पैक्ट फैक्टर इज द ओनली क्राइटेरिया जो कि आपके रिसर्च आउटपुट को